Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about pronouns. We all know pronouns are those words that are used in place of nouns, जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं. So that in order to avoid the repetition of nouns. So let's just. So the title of our chapter is pronouns. What are pronouns that replaces a noun and perform almost all the functions of a noun. जैसे कि they should watch less television. Television कम देखना चाहिए. She asked for the feedback but received none, which was disappointing. जो कि बहुत ज़्यादा disappointing था. जो words हैं जैसे कि they, she, ये सब क्या है? Pronouns हैं. Moving on to this types of pronoun, first is the personal pronouns. Personal आप अपने नाम से indicate करते हैं. It represents people or you can say कोई भी चीज, right? They refers to the first person मतलब कि speaker, second person जिससे हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करी जा रही है. जैसे कि प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. एंड इफ द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे कि ही गॉट अ न्यू जॉब, दिस इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन. दिस मनी इज अर्स, ये मनी हमारी है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन में आई का आई ही रहता है, सिंगुलर में, प्लूरल में इट विल बी यू. नेक्स्ट इज सेकंड में यू का यू ही रहता है, ही शी इट का दे हो जाता है. नेक्स्ट इज आप पर्सन को ऑब्जेक्ट में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट में मी का अस हो जाता है, सेकंड में यू का यू ही रहता है, और हिम हर इट का क्या हो जाता है? देव हो जाता है. Demonstrative matlab this, that, these, those, right? They are used to stand in a noun, and they are used to point specific people or things. This, that, these, those, demonstrative, right? I cannot walk fast because यही मेरी problem है. Did you buy these in London? क्या तुमने वो चीजें लंदन में buy करी थी? On behalf of this, you have to complete exercises on your own. Next is possessive. Possessive means ownership or belongingness that demonstrate ownership. Mine, our, hers, his, theirs. ये सब क्या है? Demonstrative है. जैसे कि I accepted their invitation. मैंने उनकी invitation को accept कर लिया था. His handwriting is very good as mine. मेरे जैसी बहुत ही सुंदर है. Interrogative means अपने आप में ही पता चलता है, which represents and ask the questions जैसे कि who, all सारे W, who, what, whenever, what, whoever, whichever, whatever, ये सब क्या है? Interrogative. On behalf of this, you have to complete these exercises on your own, right? Next comes the indefinite. Indefinite means चीजों में आप अभी definite नहीं है. जैसे कि it refers to the peoples or things in a general way without specifying exactly आप किसके बारे में refer कर रहे हैं. जैसे all, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, someone, several, in, somebody, राइट, nobody, for. जैसे कि does anyone have a pen, क्या किसी के पास पेन है? राइट, दिस इज एन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन लगा हुआ है. आई वॉज लुकिंग फॉर अ पेंसिल, क्या कोई बची है? देयर इज एनी लेफ्ट? आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, डू यू वांट सम? मूविंग ऑन टू दिस, रिलेटिव प्रोनाउन मींस दैट इंट्रोड्यूस अ रिलेशनशिप. ये क्या करता है? एक रिलेटिव क्लॉज व्हिच प्रोवाइड्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इन अ नाउन फ्रेज इन द मेन क्लॉज. देन हम क्या करते हैं? द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर हु, whom, whose, that, which. द हाउस दैट जैक, जो जैक ने बनवाया था वो बहुत ही बड़ा है. एंड द प्रोफेसर जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आई रिसेंटली रिसीव टेन्योर, जितना उनको टेन्योर मिला है. द टेन्योर इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग, लाइक द प्रेसिडेंट हैज द टेन्योर ऑफ वर्किंग फॉर 5 years or 5 or 10 years similarly. On behalf of this, you have to complete these exercise on your own. Then moving on to is reflexive. Reflexive means जो वापस से reflect back करते हैं. That is refers back to the subject of the sentence, or you can say clauses, when the subject is the object, or you can the same. जैसे कि myself, ourself, yourself, themselves, himself, herself, itself, सबके आगे self लगा देना. जैसे कि I saw myself in the river. In the mirror में मैं देखता हूँ. Our children they walk to the school खुद से by themselves. Emphatic मतलब चीजों को आप जोड़ दे रहे हैं. That has already been mentioned. जैसे कि she herself received the prize. ये प्राइज मैंने खुद से जीता है. The president himself, प्रेसिडेंट ने खुद से इनॉग्रेट किया है उस इवेंट को. On behalf of this, you have to complete this exercise on your own. Moving on to the next is distributive. Distribute means चीजों को distribute कर देना. It consider the members of the group as separately. Please keep in mind, separately लिखते टाइम आप यहाँ पे एक ही जगह e लगाते हैं, which is wrong. सेपरेट में SEPARA होता है, बच्चे यूजुअली R के बाद E लगाते हैं. Please keep in mind. Rather than जैसे कि each, either, nor, neither, anyone, none, no one, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, राइट. ईच ऑफ द स्टूडेंट विल रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन. आप कंप्लीट करें तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा. नाइदर ऑफ द कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ.
मूविंग ऑन टू दिस, रेसिप्रोकल मीन्स, रेसिप्रोकल अपने आप में इंडिकेट करता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप टू आर पीपल के, यहाँ पे हम डिपेंड करते हैं, ईच वन आइदर वन, ये सब क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे पीटर एंड मैरी एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, दे हेल्प ईच अदर, वी सेंड वन अनदर क्रिसमस कार्ड, वन अनदर मतलब एक को और किसी और को भी कार्ड भेजे। ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू कंप्लीट these exercises so on your own. So that was all about pronouns that we have just studied. Go through all the rules and write down in your respective notebooks and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.